Good morning, students. In this video lecture, I am going to discuss the topic after resonance and resonance structure. You know, in your NCERT textbook, after resonance and resonance structure, the topic is your resonance effect. Now this resonance effect is also known as Mesomeric effect. So there is no difference between your resonance effect and your Mesomeric effect. In short, resonance effect is known as your R effect. And similarly, if we use the term Mesomeric effect, it is referred as your M effect. So both the resonance effect and the Mesomeric effect are same. Now first of all, let us discuss the definition of resonance effect. कि अगर मान लो आपको एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाए कि डिफाइन रेजोनेंस इफेक्ट, नॉट रेजोनेंस, डिफाइन मेसोमेरिक इफेक्ट और डिफाइन रेजोनेंस इफेक्ट, then how will you define it? I have already written the definition of the resonance effect. Now let us observe the definition. Resonance effect is defined as the polarity produced in the molecule. So it is the polarity produced in the molecule by the interaction of, I hope you know the meaning of interaction, by the interaction of two pi bond. So there may be interaction between two pi bond or between a pi bond and a lone pair of electron. So the interaction may be between your two pi bond or between a pi bond and a lone pair of electron present on adjacent atom. I hope you know the meaning of adjacent atom. This effect is transmitted through the chain. So like your inductive effect, it is also transmitted through the chain. Now one very important point regarding your resonance effect, that it is much familiar in case of your aromatic compound, and this resonance effect particularly is very much applicable in your class 12. In 11 it is not very much applicable, but in class 12 it is very much applicable. Now the resonance effect or the mesomeric effect, it is of your two type, like inductive effect, as you know, positive inductive effect and negative. Here also it is of two type. Number one is your plus M or plus R effect. If I say plus M, it means it is positive mesomeric effect. If I say it is plus R, it means it is positive resonance effect. The second is your minus M effect, that is your negative mesomeric effect. Or if I say minus R, it means it is your negative resonance effect. So I hope the symbols are clear. Plus M, minus M. Similarly we have plus R or minus R. Positive mesomeric or positive resonance, negative mesomeric and your negative
resonance. Now what is positive mesomeric effect? In case of plus M effect, a group is said to have plus M or plus R effect. जैसे आपने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था कि कुछ ग्रुप जो है वो प्लस आई ग्रुप है और कुछ ग्रुप जो है वो माइनस आई ग्रुप है. इफ द ग्रुप्स आर माइनस आई, their electron withdrawing. If the groups are plus I, their electron donating. So a group is said to have plus M or plus R effect, or a group is said to have of plus M or plus R character when the displacement of the electron pair is away from it. When the displacement of the electron pair is away from it. However, a group is said to have minus M or minus R when the displacement of electron pair is not away from it, just opposite, is towards it. Now let us see the example. If you see the example, then there will be no confusion in understanding your plus M or plus R. So first of all, definition रहने दीजिए, that will help you to understand what is plus M or what is plus R. Say, if I write that NH2 group, if I write about NH2 group, you know NH2 group is your amino group. So this amino group is your of plus M or plus R character. This amino group is your plus M or plus R character. So how it is of plus M or plus R character, and why it will generate your plus M or plus R effect? आइए इसको देखते हैं. So for example, if we have a compound like this is your aniline. This is your aniline, that is benzenamide. Now in this aniline, this nitrogen have a lone pair. Somebody asks you कि भाई इस aniline में आपका नाइट्रोजन पे क्यों लोन पेयर है? You know the valence electron of nitrogen is 5. Out of 5, उस 5 में से दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए. जस्ट यू ऑब्जर्व, दिस इज वन हाइड्रोजन, दिस इज अनदर हाइड्रोजन, एंड द थर्ड इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद दिस कार्बन. तो आउट ऑफ 5 3 इज इन्वॉल्व, तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल रिमेन एज योर लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन. तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये नाइट्रोजन पे कैसे लोन पेयर आ गया. ठीक है. नाउ आई राइट एज NH2 and there is lone pair. Now what happens due to resonance? What is the main principle of resonance? In resonance, a lone pair is converted to bond pair and a bond pair is converted to lone pair. This is the main gist of resonance. कहता हमारे रेजोनेंस का जो मेन पॉइंट है, जिसको कहते हैं कि पूरे रेजोनेंस को कहे कि कोई एक वर्ड में आप डिफाइन कर दीजिए, एक शब्द में एक छोटा सा वर्ड दे दीजिए, तो आप वो वर्ड दोगे कि ए लोन पेयर कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड ए बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर. दैट इज द इंटरैक्शन. दैट इज द इंटरैक्शन बिटवीन द पाई बॉन्ड एंड द lone pair of adjacent atom. हमने ये definition में लिखा है. Now see, on nitrogen there is a lone pair. On nitrogen there is a lone pair, while on adjacent atom that is carbon. ये adjacent हुआ. इस पे देखिए आपका डबल बॉन्ड है, and in double bond there is one sigma and one pi. So this is your lone pair. आप ध्यान दोगे, this is your lone pair and this is your pi bond.
So interaction between lone pair and pi bond is known as resonance effect. चाहे वो प्लस एम हो माइनस एम हो वो बात की बात है, बट व्हाट हैपेंस इन मेसोमेरिक इफेक्ट? इन मेसोमेरिक इफेक्ट देयर इज ए इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर एंड ए pi bond. That already I have given in definition, or the interaction between two pi bonds. तो दोनों को ही आप क्या कहते हो? दोनों को ही आप मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हो, चाहे वो प्लस एम हो चाहे वो माइनस. सो द इंटरेक्शन बिटवीन योर लोन पेयर एंड दी पाई बॉन्ड. ओके, ठीक है भाई. सो दिस इज योर लोन पेयर, दिस इज पाई बॉन्ड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरेक्शन? द क्वेश्चन इज कि इंटरेक्शन का मतलब क्या होगा? एक दूसरे से interact करना, that is the meaning of interaction. So what will happen? This lone pair will move on to this bond. This bond means this carbon nitrogen bond, this becomes double bond. तो ये जो lone pair था ये bond pair में convert हो गया, और जो pi bond pair था ये आपको open हो गया और ये lone pair में convert हो गया. Now say this is number one canonical structure. Different structures are your canonical structure or resonating structure. Then we can write the second structure of this type. See, this is double bond, again it is double bond. Now this is NH2 and there is a positive charge. Now why there is a positive charge? That positive charge will indicate the movement of electron. ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर था वो वहां से अवे हो गया. ठीक है. नाउ दिस बॉन्ड पेयर विल कम, सो देयर इज ए इलेक्ट्रॉन पेयर, देयर इज ए इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन दिस कार्बन. सो दिस इज योर स्ट्रक्चर नंबर 2. नाउ व्हाट हैपेंस इन स्ट्रक्चर नंबर 3? दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस विल मूव टू दिस बॉन्ड and this bond pair will open at this carbon. देखिए ये जो लोन पेयर था फिर ये पाई बॉन्ड बना लिया, और ये जो पाई बॉन्ड था फिर लोन पेयर में यहाँ के कन्वर्ट हो गया नंबर 3. Now what will be number 4? Number 4 you can write this is double bond NH2 and this is positive charge. ये देखिए पाई बॉन्ड बना लिया, ये यहाँ आपका लोन पेयर आ गया. That is lone, sorry, this is not third, sorry, this is your second, this is third, and then we have double bond. Fourth में what happens in fourth? ये फिर इधर देखिए डबल बॉन्ड बनाया, फिर यहाँ लोन पेयर आ गया. So lone pair means a pair of electron or minus, both are same. This type, see this is electron pair, this is double bond NH2 plus. This is a structure number 4. Now we have a structure number 5. Structure number 5, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना दिया हमने. Then structure number 5 I can write here. This will again form double bond and this will back. ये फिर वापस चला गया जहां से वो originate किया था. And then this one is the fifth structure like this type NH2 and again we have a lone pair. Now just you observe in this effect. In this effect, what happens? In this effect, NH2 is the group. NH2 is the group which NH2 is the group from which the displacement of electron pair is away from it. NH2 वो ग्रुप लगा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा. NH2 वो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन पे जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर गायब हो गया, चला गया. सो ए ग्रुप इज सेड टू हैव
a group is said to have your plus m or plus r when the displacement of electron pair is away from it. ये NH2 इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर नहीं ले रहा, बल्कि वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, अवे फ्रॉम इट, यहां से दूर जा रहा है. दैट्स व्हाई योर NH2 इज योर प्लस m और प्लस r group. So we can say this NH2, that is your amino group, is your plus m or plus r group. For example, if you simply observe structure 1 and structure 5, if you simply observe the structure 1 and structure 5, just observe, this is your structure 1, this is lone pair, and what is your structure 5? Structure 5 is of this kind. तो यदि आप स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 5 को देखते हो यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए, यही आपका स्ट्रक्चर 1 और 5 है. दे आर सेम, सिंपली बेंजीन रिंग के अंदर जो आपका पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट कर गया. हमने रेजोनेंस में ऑलरेडी दिखा दिया आपको कि बेंजीन का पाई बॉन्ड क्यों शिफ्ट होता है, ड्यू टू रेजोनेंस. सो दीज टू आर योर कैनोनिकल स्ट्रक्चर. तो इसमें ये स्ट्रक्चर डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट नहीं होता है, इट कन्वर्ट by a series of change. So it is the virtue of amino group, it is the virtue of amino group which give away the electron pair, and that's why your NH2 group is your plus m or plus r group. Now let us see an example of your minus m or minus r group. फिर आपको तुरंत डिफरेंस पता चल जाएगा दोनों में, प्लस m और प्लस r में. से माइनस m और माइनस r. एग्जाम्पल इज योर नाइट्रो ग्रुप. एग्जाम्पल इज योर NO2 group, that is नाइट्रो ग्रुप. कंसीडर nitrobenzene. See, this is your nitrobenzene. ये नाइट्रोजन हो गया. तो नाइट्रोबेंजीन में आप जानते हो, वन इज डबल बॉन्ड एंड अनदर इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अनदर इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दिस इज नाइट्रोबेंजीन. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल डबल बॉन्ड एंड अ कोऑर्डिनेट? इन डबल बॉन्ड शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन. So this is the two lone pair. क्यों भाई? क्योंकि आपका ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो देखिए 2 4 और 2 यहाँ शेयरिंग किया. नाइट्रोजन आप समझ रहे हैं, नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5, तो 2 यहाँ शेयरिंग किया, एक यहाँ शेयरिंग किया, हो गए 3, बच गया 2 इलेक्ट्रॉन. दैट 2 इलेक्ट्रॉन इज हियर. यहाँ देखिए, दिस इज योर 2 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज 2 4 6. So we can say this is the situation. Now in NCERT book you observe coordinate bond is represented by a simply covalent bond. So जो आपका coordinate bond है ना, आप उसको simple covalent bond से भी denote कर सकते हैं. Now what will happen in this case? What will happen in this case? Just to observe that what happens. This is double bond, this is your double bond in case of this case. Now in mesomeric effect there is an interaction between a pi bond and a lone pair, or between two pi bonds. See, this is pi bond, this is pi bond. On nitrogen we have pi bond, on nitrogen we have pi bond, and on carbon we have also a pi bond. So what happens, this is sigma, this is pi, so one of the electron pair will shift here and then this will shift at this point. So this is the interaction between two adjacent pi bond. This is the structure 1.
द सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस टाइप, आप ऐसे लिख दीजिए, ये देखिए यहां से जब इलेक्ट्रॉन पेयर चला जाएगा, नाउ इन दिस केस देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, नाउ दिस इज डबल बॉन्ड, this is your coordinate bond, and then this is single bond, it is 2 4 6, this is minus. Why this is minus? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, जो बॉन्डेड पेयर है, वो शिफ्ट किया, that's why this is minus, that's why this is your minus. So this is a structure 1, this is a structure 2. now थर्ड में क्या होगा, देखिए ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करेगा to satisfy or to reduce the positive charge, to satisfy the tetravalency. Then third one is your like this. Third देखा जाए, positive charge will shift at this point. This is double bond, this is coordinate, this is 2 4 6 and minus, this is a structure 3. Now in this case you just observe why it is minus m, because the displacement of the electron pair is towards the group. The displacement of the electron pair towards the NO2 group. That's why this NO2 is your minus m or minus r. Now what will be the fourth one? Fourth one देखिए क्या होगा, फिर this will move, ये यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड, तो जब ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, सोचिए it is like this, positive charge will shift at this position, and then there is double bond nitrogen, ये तो coordinate है ही, this is oxygen 2 4 6, this is minus, this is structure number 4. now fifth में क्या होगा, fifth में ये बॉन्ड आप देखिए, यहाँ वाला जो देखिए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, this will move, तो ये मूव कर गया तो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ मूव करेगा, देन यू कैन से वी आर गेटिंग द ओरिजिनल स्ट्रक्चर लाइक दिस. देखिए ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये रहा नाइट्रोजन, ये फिर देखिए डबल बॉन्ड हो गया, और ये तो अपना कोऑर्डिनेट पहले से जो था आपका, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो दिस इज योर, एंड दिस कम्स टू बी डबल बॉन्ड. दिस इज योर स्ट्रक्चर नंबर 5. So these are the 5 different resonating structure of your nitrobenzene, which show that this NO2 group have minus M or minus R effect or character. Now the question is, what are the different groups? What are the different examples of group which will show plus M and minus M character? So let us see the different examples. Examples of plus M or plus R. Number 1, halogen group. Halogen group, it is of plus M or plus R. Then we have alcoholic group, that is OH. Then we have OR. OR बोलते हैं alkoxy group. We have OR means alkoxy group. Then we have NH2, that is your amino group. Then we have NHR. NHR is called your secondary amino group. Secondary amino group. Then we have NR2, that is your tertiary amino group. You can say it is your NR2, it is your tertiary amino group. And then we have your NHCOCH3 group. NHCOCH3 group. आप इस सब डिटेल क्लास 12 में भी पढ़ोगे. तो ये जितने भी ग्रुप है ना आपको, अब हैलोजन में चाहे वो क्लोरो ग्रुप हो चाहे वो ब्रोमो ग्रुप हो, ये सब के सब आपको प्लस एम कैरेक्टर के होंगे. प्लस एम मीन्स दे विल गिव अवे द इलेक्ट्रॉन पेयर, दे विल नॉट withdraw the electron pair, they will
give away the electron pair. That's why they are of your plus M or plus R character. Now what are the different examples of your minus M or minus R? For example, minus M or minus R, that is your nitro group, that is your aldehyde group, that is your ketonic group. This is your ketonic group. Then we have carboxyl group. Then we have carboxyl group. Then we have cyano group, cyano group. So these are of your minus M or minus R character. तो अभी जैसे हमने आपको बताया, let us suppose I have one example. Say I have phenol like this. So this OH group is attached. There is two lone pair. Somebody asks you what type of character of your OH group. Now your answer will be, it will be of plus M. क्यों प्लस M है भाई? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, दूर भेज देगा, अपने से अवे कर देगा. But if somebody asks you, if we have your benzaldehyde, suppose if we have your benzaldehyde, then what will happen? This oxygen is more electronegative than carbon. So what will happen? This group will withdraw electron pair. ये पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? विड्रॉ कर लेगा. So I hope that is everything about your resonance structure and mesomeric effect. Thank you.